Welcome everyone, this is your host TGQ. Today we'll be in conversation with a very special guest. He made our early 2000s memorable with his amazing songs. I am so proud to announce that we have an amazing person on our set today, and that is Sir EMU from Fuzon. Hello sir, how are you sir? Very well. Thank you so much for coming on our show. Thank you very much, mate. Thank you so much. So let's start this conversation with a question that I really want to ask you from the beginning. That you have been into the industry for 30 years of music, right? Approximately 30 years. Not approximately. It's been. It's going to be in January 32 years. It's going to be 32 years, Yeah. mashallah. So what's the insight? Like how music have changed? What's your insight on that? To be honest, because it's kind of like 3 decades from now. Yeah. You know, 90s, because I grew up and I start my musical career in 1990 exactly. Yeah. So that's the time, you know, I start counting. So that was the 90s era that you know, Yeah. everybody went through. I went through the boot camp and everything, like you know, everyone does. Should I change the language also in between? Yeah, Okay, sure. great. So you know, that was a boot camp for me in the beginning because I was so engrossed in music in my school days. So what happened that, you know, the 90s part, we saw all the bands and the solo acts, and there was a little, you know, still very shaky in between, like artists like Sajad Ali, Junoon, Yes. Awaz, Absolutely. Vital Signs. They were going down at that time, but still they were there, and many newcomers were coming in. And वो जब टाइम हम देखते हैं तो वो टाइम में बहुत सारे आर्टिस्ट आए, बिल्टअप हुए, मगर वो फिर भी प्राइवेट चैनल्स का दौर नहीं था. वो एक एक दो चैनल्स थे, बिल्कुल। पीटीवी था, एक एनटीएम था. बिल्कुल। वो मेरा लर्निंग कर्व था, लर्निंग प्रोसेस था. उस 10 सालों में, उन 6 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा. एंड देन जब 2000 आया, देयर वाज अ, यू नो, इट वाज अ बिग बैंग थ्योरी हैपेंड फॉर एवरीवन. Yes. तो वो एक म्यूजिकल जर्नी एक वैसे हो गई. तो एज अ म्यूजिक 90s में एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर काम कर रहा था और एज अ सेशन म्यूजिशियन काम कर रहा था. रोल चेंज हो गए, रोल्स ऐसे चेंज हो गए. जब 2000 आया तो बैंड बनाया. बिल्कुल. And that was your time. जी, That तो was मुझे your उस वक्त time. 11 साल हो गए थे बैंड बनाने में. तो इन म्यूजिक करते हुए बैंड तो Music उस करते वक्त बनाया. तो फिर वहाँ से वो एक जर्नी डिफरेंट थी, म्यूजिकलिटी चेंज हुई, इवॉल्व हुए आप, एंड देन सो ऑन सो फोर्थ. So on, so on. तो उस टाइम और इस टाइम में काफी चेंज आया है. What do you think कितना चेंज आया है? देखें, चेंज आया है 2010 के बाद से. 2010 के बाद से. जी, ये क्योंकि अब ऑनेस्टली हम कहते हैं डिजिटल मीडिया इज वेरी गुड. ठीक है, वी अंडरस्टूड नाउ और ट्राइंग टू अंडरस्टैंड बिकॉज यू गाइज आर यंग. Exactly. आई एम, यू नो, फ्रॉम बिफोर 2000 ना. Yes. कुछ लोग तो मेरे बाद 2000 के बाद पैदा हुए हैं ना, तो बिल्कुल। वो उनकी बिल्कुल एक डिफरेंट mindset है बिल्कुल उनका, mindset बिल्कुल। है. तो हम वो बात नहीं कर रहे. मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि वो चेंजेस आने थी और आ गई. तो वो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था एनालॉग एंड डिजिटल का, और एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था टीवी का और डिजिटल का. डिजिटल का, बिल्कुल. जो अच्छा टाइम टीवी ने दिखाया वो 2010 से पहले तक दिखाया. टीवी ने अपना रोल अदा किया एज रिस्पॉन्सिबल मीडिया. बिल्कुल. बिल्कुल. बैंड्स बने, आर्टिस्ट आए, चीज़ें हुई. आफ्टर 2010 टीवी ने सपोर्ट छोड़ दी, टीवी ने सपोर्ट छोड़ी. तो फिर सबके हाथ में आ गया कंट्रोल. डिजिटल आया ना, डिजिटल आ गया. इजी हो गया ना. Digital योर हो गया. फोन इज योर टीवी, Everything, yeah. योर, यू नो, आप कुछ भी वहाँ से टेलीकास्ट कर सकते हैं. Yeah. So it's The like that. cinemas, everything is in your phone now. It's in just your in your phone. hand. So artist, half-baked artist, good बिल्कुल, artist, तो बिल्कुल. सबको कंट्रोल अपने हाथ में मिल गया. तो म्यूजिकलिटी चेंज हो गई. Musical quality, बिल्कुल. So you started music as a hobby, not profession. So who helped you along the way? किसने, who you looked up to? To be honest, my father, number one, Yeah. because I grew up listening, and we have 4 brothers, so I'm the youngest. Yeah. So we were always inclined towards arts and everything. So my father make sure कि वो हमें movies दिखाते थे. Oh,
म्यूजिक सुनाते थे बचपन से, छोटे That's से। nice. मैं 7 साल की उम्र से सुन रहा हूँ म्यूजिक, तो सारे भाई ना, तो आई वॉज द ओनली चाइल्ड हु पिक्ड अप म्यूजिक। Oh, होता है ना कि आप पुराना म्यूजिक भी सुन रहे हैं, के.एल. सहगल भी सुन रहे हैं, एल्विस प्रेस्ली भी सुन रहे हैं, तो ये मेरे फादर हमेशा से सुनाते थे। you got interested towards that. Yes, I got interested. So your father was the one Yeah. to support you He is along my the role way. model on that. That's Yeah. nice. So I have heard from a lot of forums that you have said that you have faced a lot of hardships in your early career because you were not even recognized on the television earlier. So how did you overcome this work politics or outshine it so gracefully? You know. देखिए, पॉलिटिक्स जो है ना, वो अज़ल से अब तक रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। नंबर 1 वो हमारी नेचर में है, हमारी नहीं, इंसान की फितरत में। इंसान की फितरत है। माई 90s डेज, इसलिए मैं बूट कैंप कह रहा था, क्योंकि आप यू वर्क रियली हार्ड, यू आर वेरी enthusiastic, you are hungry for work, hungry to learn something. वो सब कुछ हो रहा था। कुछ लोग हेल्प कर रहे थे, कुछ लोग नहीं कर रहे थे, स्ट्रेट अवे, बिकॉज दे कैन गेट इनसिक्योर एंड कोई मसला नहीं। ये हमारे माशरे का एक नॉर्म है भाई। When you're good तो लोग वैसे इनसिक्योर हो जाते हैं। बिल्कुल, वो मेरे लाल बीनी पे भी शिकायत कर सकते हैं कि इसने लाल बीनी क्यों पहनी हुई है, हो सकता है ना, काम में नहीं शिकायत करेंगे, बोले लाल क्यों पहना हुआ इसने, Exactly. ठीक है ना, तो दैट्स द थिंग। हाँ, मैं एक्सप्लॉइट बहुत हुआ हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों के काम करके दिए हैं, उसके बाद मुझे कभी पैसे नहीं मिले, क्रेडिट नहीं मिला, जो आज बहुत बड़े नाम हैं उन लोगों के। और मगर क्या चीज़, व्हाट वाज ड्राइविंग मी, फेथ, पैशन एंड बिलीफ कि नहीं, आई एम गोइंग टू डू वन डे, आई एम गोइंग टू डू वेरी गुड। तो ये मीडिया बिजनेस नहीं है, ये हर जगह ऐसे ही है। तो मगर मेरा पैशन ने हर चीज़ को ओवरकम कर दिया, उन तकलीफ़ों को ओवरकम कर दिया। मगर बताना ज़रूरी होता है, लोगों को ये ना लगे लोगों को कि यार बस मैं ऐसे ही उठ के आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ख्वारी काटनी पड़ती है, बहुत रात जागना पड़ता है, और पैसे की कोई बात नहीं है इसमें, पैसे मिलते ही नहीं हैं आपको। अच्छा। पैसे आज भी नहीं मिलते, ट्रस्ट में। अच्छा। आज भी नहीं मिलते, पूछ लें यहाँ पे सबसे कि पैसे निकलवाने पड़ते हैं, पैसे मिलते नहीं हैं। बिल्कुल। So it's just like that. बिल्कुल, but then you came out of it बहुत strongest form में आप। देखिए ना, आपके अंदर एक एंगर भी होता है। हाँ। दो चीज़ें, इफ़ यू आर हंग्री फॉर वर्क, आप आगे बढ़ेंगे, आप यू आर क्रिएटिव एंड यू हैव द बिलीव कि नहीं यार मैं करूँगा, ये मैं काम करने जा रहा हूँ, तो वो हमें फ्यूजन की जगह, फ्यूजन की वजह से मिल गया, क्योंकि हमने बनाया है वही काम कि बिल्कुल अलग। इसलिए कि उस वक्त एक भंगड़ा का दौर था, भंगड़ा वाज द किंग, एक साइड पे रॉक म्यूजिक का दौर था। I wanted to ask you how fusion even started, you know? देखिए, वो तो हम काम कर रहे थे। What was the idea behind it? Idea is very simple. We 3 extremely talented musicians met, और हमने बोला चलो यार लेट्स स्टार्ट। मेरा स्टूडियो होता था, वो मैंने 1999 में बनाया था, पहला स्टूडियो। तो हम वी यूज्ड टू हैंग आउट, मैं और शालिम, वी बीन फ्रेंड्स फॉर नाउ वी बीन फ्रेंड्स फॉर 6 and 26 28 years। ओह नाइस, ठीक है ना, तो बहुत सारे साल होते हैं ना, ठीक है ना। तो शालिम बुरा मानेगा इसलिए कि वो अभी तक 28 साल का है। तो आप समझ रही है ना, बिल्कुल। तो मैंने बता दिया, सॉरी यार, सॉरी शालिम। तो दैट्स हाउ, यू नो, फिर बैंड बनाया। तो बैंड बनाने का मकसद सिर्फ ये था। तो मैं यहाँ पे एक बात कोट करूँगा, एक बड़े जीनियस म्यूजिशियंस थे हमारे मुल्क के, मरहूम इंतकाल कर गए, जिनका नाम था आमिर ज़की। तो उसने मुझे एक तरफ बोला स्टूडियो में कि यार ईमू, तुम्हें अंदाज़ा है एक बात का, एंड दैट स्पीच, शॉर्ट स्पीच हिट मी लाइक एनीथिंग। कह रहे हैं तुम्हें अंदाज़ा है कि जितने अच्छे काम वाले हैं, जितने टैलेंटेड लोग हैं, वो सिर्फ सेशन म्यूजिशियंस हैं, वो टीवी पे नहीं आ रहे। उफ, मेरे लिए ना वो बात ऐसी थी कि वो रह गई याद। मैंने कहा यार आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आमिर भाई। सिंस आफ्टर दैट, ये दैट वाज 98 जी। फिर 99 के एंड में 2000 में हमने बैंड बनाया, और 1 साल के अंदर हमने अपना म्यूज़िक रेडी किया। एंड वो यही देखते हुए कि अच्छा हमने क्या करना है, एक तरफ रॉक म्यूज़िक है, एक तरफ भंगड़ा म्यूज़िक है, पॉप म्यूज़िक बहुत हो रहा है, भंगड़ा छाए हुए थे। भंगड़ा म्यूज़िक अच्छा म्यूज़िक है, आई मीन, तो मगर हमने अपनी एक नीश मार्केट बनानी थी, दैट्स इट।
That's how we came into being. And you created it at that time. We all created it. Early 2000s was your time. I still remember वो गाने मुझे याद हैं, दीवाने हम चले साथ, वो connect करते हैं. Those are not songs, those are memories. Yeah, बिल्कुल. For me especially, those are like memories. If I hear that, वो melody सुनते हैं ना, जो आपको याद है, एक nostalgia आपके आ जाता है. उधर चले जाते हैं. बिल्कुल उधर चले जाते हैं. So you have given that to a lot of people. This is what fusion did. It moved people actually. It moved people because देखें mature musicians थे ना. एज वाइज काम के बहुत काम था एंड यू नो बॉडी ऑफ वर्क बहुत था किया हुआ था तीनों ने अलग अलग तीनों डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग थे शफकत भाई क्लासिकल बैकग्राउंड के मैं और शालम रॉक म्यूजिशियंस बट यू नो बहुत इवॉल्व कि जिसमें फ्यूजन म्यूजिक भी अंडरस्टैंड करते हैं फिर ये भी करते हैं तो वी क्रिएटेड दिस niche style of music. When you all connected, so the magic happened. Yeah. This is what everybody says. You know, when they three connected, the magic happened. So recently, you were declared as global cultural ambassador in Doha. Wow, you know that. I know. Wow. So how did you feel at that time? What was your feeling at that time? I mean, to be honest, that was not just great feeling. That's the achievement, you know. Absolutely, big achievement. Big. वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत है और उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया मुझे स्पेशली बिकॉज देखें आप टाइम के साथ ग्रो करते जाते हैं ना काम में भी ग्रो करते हैं तो आपकी उस काम में से एवेन्यूज़ निकलते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द एवेन्यूज़ दैट यू नो मुझे एक अचीवमेंट मिली कि अच्छा नो यू आर द ग्लोबल एम्बेसडर सैयद मोहम्मद इमरान मोमिना AKA EMU. जी हाँ तो वो बहुत खुशी की बात थी आई वॉज वेरी प्राउड एंड वेरी प्राउड पाकिस्तानी ऑल्सो because we are the real ambassador for peace from our country. Absolutely, we all were very proud of you at that time. It was a very big achievement for Pakistan and you both together. So I'm going to ask you a tricky question. Which song of your albums do you like the best? So that one is a tricky one, I'm sure. That's your personal favorite. नहीं मैं बताता हूँ आपको बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ये है ट्रिकी देखिए पहले एल्बम में तो वो 11 गाने थे जी और हम परेशान थे कि अच्छा यार हमारा कौन सा फेवरेट गाना है तो मैं कलेक्टिवली बताता हूँ कि हम तीनों का एक यूनानिमस गाना था वो था तेरे बिना ब्यूटीफुल सॉन्ग इट इज ब्यूटीफुल सॉन्ग शफकत को भी पसंद था मुझे भी पसंद था शालम को भी पसंद ये आपके पूरे ग्रुप को पसंद था तीनों को पसंद था तो ये फ्यूजन फेवरेट हो गया हाँ फ्यूजन फेवरेट हो गया So in the end, for the questionnaire, I want to ask you, what advice, if you have to give to your 18-year-old self and to our generation at the same time, what would you give them after all the things you have seen in the, you know? 18 साल वाले EMU को मैं बताना चाहता हूँ कि खामोशी से बातें सुना करो. Don't react. Very strong. It's very strong. It's even for our generation right now. It's very important. It's very important. इसलिए कि आप सुनने से पहले ना बोलना शुरू कर देते हैं. You don't listen to others then. Absolutely. Then आपकी बातें निकल जाती हैं. जो information आ रही है ना वो नहीं आएगी. Because you are young, strong, and you think you are on top of the world. You are not. You are not. We'll be right back after a short break. Don't go anywhere. She's daring, instinctive, and passionate. He's inspirational, inventive, and charismatic. She wants to challenge the boundaries of imagination. He wants to spread the spirit of compassion. This is the narrative of our people, and they all seek knowledge as a virtue to begin their stories of life. ZCOMS, your story begins here. For more information, log on to zcoms.zu.edu.pk. Welcome back. So we are going to do a rapid fire round.
So आपको बहुत जल्दी जवाब देने. I'm going to ask you. I'm going to ask you questions. Now मुझे डर लग रहा है. It's not इतना डरने वाली बात नहीं, लेकिन let's start. So shall we start? Please go ahead. Sagar or Journey? Sagar. Emo or Imran? Emu. New era or old era? Old era. Band or individual? Band. Coffee or tea? Tea. Nightlife or early bird? Early bird. Introvert or extrovert? Extrovert. Thank you so much for coming. Actually, this is a dream come true wala scene. So thank you so much. Thank you so much for coming on our show. My pleasure. Thank you very much for having me over also. And I just need to say one thing. Yes, please. This is very good. You know, you guys can. आप लोग ने भी बहुत evolve होना है, बहुत जाना है. अपने roots को ना छोड़िएगा. That's the only thing. Stay on your roots. Yeah, that's a very good message for everybody out there. Yeah. Thank you so much. Thank you. you. I hope you enjoyed the show. Catch us in our next episode with another amazing guest. Till then, stay tuned.